Hello everyone, welcome to PT Reorder Paragraph Real Exam Question Series. This is 45th video in this series. It means that we have already discussed 44 real exam questions जो students को exams में आए हैं. Along with that, we have seen the strategies and the hacks how to solve them. So let's get started. First things first, now PT is accepted in UK and 90% of Canadian universities accept PT Academic, and a new test, which is PT Home, has started for those who are looking to apply for family visa in the UK. My name is Bharat Bridge and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now students ask, so can we do also? The answer is yes. You can also do if you apply the same strategies and hacks for all the questions. Many students of ours have scored 90, so if they can score, you can also score. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So PT reading is of 32 to 41 minutes and it is not scored out of 90. The reading module is just of 47 marks. It has 5 question types and today's topic, reorder paragraphs, is the third video in this series. So this is the real scoring for the reading module. As you can see, the reading module here that is only of 47 marks. And today's topic, which is reorder paragraph, is of 6 marks. So if you are going to get 2 reorder paragraphs, they will be of 3 marks each, right? So, and especially if you're looking to target for 8 bands, even single mark matters. So that's why reorder paragraphs, you have to focus on that. And how much time you can spend on solving one reorder paragraph? It's 2 minutes. This number we could find on the basis of our big data analysis and artificial intelligence analysis. अब in 2 minutes में आपको क्या करना होता है? You have to skim your content and then you have to apply the strategies and then pairs बनाने होते हैं on that basis and then you have to confirm जो आपने pairs बनाए हैं. Now, students often think 2 minutes में solve नहीं हो सकता. The reason because they try to understand the meaning of all the sentences, all the words. The answer is no. You have to simply skim it. So this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this and then we are going to discuss it. Okay. Okay, so you know the first thing which we do is finding independent line. We do this with the use of process of elimination. Independent line can stand on its own, उसमें कोई pronouns नहीं होते हैं, and if possible we find conclusion also if possible. This is optional, okay? So let's get started. By manufacturing artificial surfaces that replicated blue halos, scientists were able to test the effect on pollinators, in this case foraging bumblebees. Yes, seems like independent line. Okay, so let's keep it. Latest research has found that several common flower species have nanoscale ridges on the surface of their petals that meddle with light when viewed from certain angles. Yes, ये भी independent line लग रही है. They found that they con pronoun आ गया. So that's why this is not going to be an independent line, but let's skim it. They found that bees can see the blue halo and use it as a signal to locate the flowers more efficiently, right? So yes, ये it is not independent line, but यहाँ पे किसी blue halo की बात हो रही है, bees की बात हो रही है. These nanostructures, these are kya? So again, this cannot be your independent line. These nanostructures scatter light particles in the blue to ultraviolet color spectrum, generating a subtle effect that scientists have christened the blue halo. Okay, so ये भी आपकी independent line नहीं है.
नाउ यू हैव टू लाइन्स। ओके, अब आपको इनमें से एक इंडिपेंडेंट फर्स्ट लाइन चूज करनी है। अब देखा जाए बेस्ड ऑन आर बी ए स्ट्रैटेजी ब्रॉड टू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, कौन सी जनरल लाइन है? ओके, जनरल लाइन इज दिस वन। ओके, यहाँ पे आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हो, ये तो एक तरह से उन्होंने कुछ एप्लीकेशन की बात कर रहे हो। ये ज्यादा जनरलाइज है, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही है कि लेटेस्ट रिसर्च ने फाइंड किया कि सेवरल फ्लावर स्पीशीज में नैनोस्केल रिजेस होती हैं सरफेस पे, जो लाइट के साथ इंटरफेयर करती है। मेडल मतलब चेंज करना, इंटरफेयर करना व्हेन व्यूड फ्रॉम सर्टेन एंगल्स। ओके, अब क्योंकि सरफेसेस की बात यहाँ पे हो रही है, और यही सरफेसेस की बात यहाँ पे हो रही है कि वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आपकी कौन सी इंडिपेंडेंट लाइन बेटर है? दिस वन, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस। ओके, नाउ वी हैव टू सी द पेयर्स और द सेकेंड लाइन। सो इसमें आपके क्या क्या वर्ड्स हैं? फ्लावर स्पीशीज हैं, नैनोस्केल रिजेस है, सरफेस ऑफ द पेटल्स है। ओके, सो दीज आर मेन वर्ड्स। अब आपको हमारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। By manufacturing artificial surfaces that replicated blue halos, यहाँ पे blue halos की बात हो रही है, scientists were able to test the effect on pollinators, in this case foraging bumblebees. Bumblebees, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बी, राइट? फॉरेजिंग क्या होता है? खाना ढूंढने के लिए, जब बीज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है ब्लू हेलोज। ओके, और साथ में एम्फेसाइज्ड है, जब कोई चीज सिंगल कोट्स में होती है, यू आर गोइंग टू एम्फेसाइज इट। क्या ये कहीं और यूज हो रहा है? यस। अब आप यहाँ पे देखिए, दे फाउंड दैट बीज कैन सी द ब्लू हेलो, यहाँ पे द हो रहा है, तो क्या यहाँ पे द कहाँ पे यूज होता है जनरली? जहाँ पे आप एक बार वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हों। ओके, एंड यूज इट एज अ सिग्नल टू लोकेट फ्लावर्स मोर एफिशिएंटली। तो क्या ये लाइन जनरली इस लाइन के बाद आएगी, जो ये ब्लू हेलोज है? लेट्स सी अभी बाकी भी। ओके, दीज नैनो स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ से अब आपका एसओ स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपने नैनो स्केल रिजेस की बात की है, एंड दिस इज दीज नैनो स्ट्रक्चर्स scatter light particles in the blue to the ultraviolet color spectrum, generating a subtle effect that scientists have christened, christian मतलब कहना, बताना, the blue halo. अब चाहे यहाँ पे द यूज हो रहा है, बट दिस इज यूज फॉर एम्फोसिस। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की बात नहीं हो रही है। अब ब्लू हेलो कहाँ डिफाइन हो रहा है? यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। और वैसे भी हमारा एसओ स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और रिजेस की बात हो रही है, और वही यहाँ पे बात हो रही है, दीज नैनो स्ट्रक्चर्स। सो वी आर गोइंग टू ड्रैग दिस लाइन ओवर हेयर। ओके, अब यहाँ पे ब्लू हेलो की बात हो रही है, और यहाँ पे भी अब ब्लू हेलोस की बात हो रही है, और यहाँ पे भी ब्लू हेलो की बात हो रही है। अब एक सिंपल सी बात है, पहले डिपेंडिंग अपॉन आर एलो स्ट्रैटेजी, पहले आप कोई चीज बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, तभी तो उसका रिजल्ट देखोगे। ओके, राइट, कि उसके कारण क्या हो रहा है। सो यहाँ पे अब by manufacturing artificial surfaces that replicated blue halo, scientists were able to test the effect on pollinators, in this case foraging bumblebees. और यहाँ पे दे है वर्ड, दे यहाँ पे किसको यूज हो रहे हैं? यहाँ पे क्या कोई प्लूरल नाउन की बात हो रही है? ह्यूमंस में नहीं हो रही है। ओके, राइट, यहाँ पे कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही। तो ये दे प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? ये रेफर कर रहा है यहाँ पे साइंटिस्ट को। ओके, सो दैट्स व्हाई based on our SO strategy as well as SO strategy, so we have found कि आपका जो पेयर है वो ये पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दे और दे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है, ये पेयर आप डिसाइड कर चुके हो, ये पेयर की पोजीशन सिर्फ यहाँ पे ही आ सकती है। ओके, सो पहले मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो चीज़ें, उन्होंने मैन्युफैक्चर की, उसके बाद उन्होंने फाउंड आउट किया। ठीक है, एंड वी हैव सीन द स्ट्रैटेजीज टुडे। सो यहाँ पे आपकी एसओ स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे आपका पेयर एलओ स्ट्रैटेजी के बेस पे है, एंड अगेन एसओ स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्रोनाउंस की यूज हो रही है ओवर हियर। ओके, साइंटिस्ट को रेफर किया जा रहा है। So this is how you can make pairs easily if you know the concepts. And let's see if the answers are correct. Yes, the answers are correct.
So you see, if you know the right strategies, you can easily crack your reorders paragraphs. So what are our strategies for reorder paragraphs? So first of all, we try to find independent line, then BS strategy, which is broad to specific strategy. You had seen its use today for finding the independent line. Then CO strategy, which is chronological order strategy, जहाँ पे time की बात होती है, we use this strategy. Then LO strategy, logical order strategy. You have seen its usage also. Then with the base uses of connectors also, sometimes we find pairs, then TO rule, which is topical order rule, then AB rule, abbreviation strategy, then SO strategy, subject object strategy. You have seen its usage, and then how we find the last sentences. There are certain rules for last sentences also. Always remember, you have 2 minutes. In first 30 to 60 seconds, you have to skim the content. आपको independent line find out करनी है, और अगर conclusion भी find out हो जाए, so it's an optional one, right? But it's not sure that every time you will be able to find the concluding line also. In the next 30 to 60 seconds, you have to apply the strategies the way you have seen right now. What we do, we simply apply the strategy. We try to make the pairs. All the strategies which we teach are validated and proven strategies. The scorecards of the students in the ticker below are the proof. And these are some of our recent success stories where students have scored 90, 87, 86. So if they can achieve their target scores, you can also achieve your target score. This is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us if you want to take online coaching or in-institute coaching, or if you have any doubts or questions. Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.